अभिवादन। पशुपतिनाथ के प्रांगण में उसके चिर नागरिकों का काशी विश्वनाथ की जमीन से आए एक अनागरिक की ओर से अभिवादन। मैं बनारस का हूं, मेरा नाम व्योमेश शुक्ल है। मुझे इस बात का थोड़ा सा इल्म है कि बनारस का रिश्ता नेपाल के साथ बहुत पुराना है, इतिहास से पुराना। और आज उसी आपसदारी की, उसी रिश्ते की बात करने के लिए इस मूर्धन्य पैनल के साथ हम आपके बीच इकट्ठा हैं। सभ्यता की यात्रा, कांतिपुर, काशी, कर्नाटक और कलिंग। एक हिंदी में अलंकार होता है और आप सब उससे वाकिफ होंगे, अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, क क क क। ये अलंकारिकता जो है सिर्फ सुंदरता का ही एक प्रकार नहीं है, इसमें कोई तत्व भी होगा, वही तत्व जिसकी मीमांसा हमारे वक्ता आने वाले समय में करेंगे। आप सब यहाँ बैठे लोगों से वाकिफ हैं। मंच पर सबसे दाहिने आनंद नीलकंठ जी, जो मिथकों और पुरा कथाओं पर एकाग्र अपने लेखन के लिए भारत क्या पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। महाभारत और रामायण पर एकाग्र उनका काम बहुत सराहा गया है, भारतीय भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं। उन्होंने कई लोकप्रिय टेलीविजन सीरियलों के स्क्रीन प्ले लिखे हैं, सिया के राम वगैरह, आप सब वाकिफ हैं उनसे। और नहीं हैं तो जान लीजिए, वो गूगल पर आनंद नीलकंठ टाइप करने से आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिल जाएगा। नविता जी भारत और नेपाल के रिश्तों को बहुत गहराई से सोचने, समझने और उसके बाद लोगों को समझाने का काम कर रही हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन पेशा बीच में नहीं आता आपके सरोकारों के। हमारे बीच मैं बहुत आदर के साथ आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं, कनक मणि दीक्षित जी हैं। दक्षिण एशिया की अगर कोई पत्रकारिता है, उसका कोई चेहरा है, तो उसका बहुत बड़ा नाम संपादक, लेखक, एक्टिविस्ट। लोहिया जी कहते थे कि जेल गए बगैर पढ़ने वाले की नागरिकता पूरी नहीं होती। जेल याफ्ता, बौद्धिक। और हमारे इस पैनल के बिल्कुल केंद्र में बैठे भी हुए हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी हिंदी साहित्य संसार हैं। हिंदी साहित्य संसार के प्रतिनिधि नहीं, हिंदी साहित्य संसार के प्रवक्ता नहीं, हिंदी साहित्य संसार के नागरिक नहीं, हिंदी साहित्य संसार। वो जब हिंदी साहित्य का आकाश सितारों से खाली है, उसमें, उस खाली आकाश में हमारा आखिरी सूर्य हैं। उनकी सक्रियताओं के बारे में, उनकी रचनात्मकता के बारे में अलग से कुछ कहना न जरूरी है और न मेरी हैसियत है कि मैं बता सकूं आपको। हिंदी के कवि शमशेर बहादुर सिंह हमसे कह गए हैं अपनी एक कविता में, कविता की पंक्तियां हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। शमशेर बहुत धीमे बोलते हैं। कवि
घंघोल देता है व्यक्तियों के जल और हिला मिला देता कई दर्पणों के जल। व्यक्तियों के जल और दर्पणों के जल को आपस में हिला मिला देना ये कवि का काम है, जो वो कविता के जरिए करता है। मैं भी वही कर सकता हूं, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, कि कांतिपुर, कलिंग, कर्नाटक और काशी के जल को आपस में मिला दूं। एक छोटी सी बात आपको बता के मैं नविता जी को बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा। कोइराला परिवार जो है वो जितना नेपाल का है उतना ही बनारस का है, और बनारस उनका एक गढ़ है। जिस कॉलोनी में बनारस में उनकी रिहाइश है, उसका नाम हिंदी के सर्वोत्तम आधुनिक कवि के नाम पर पड़ा है, निराला निवेश। हिंदी की आधुनिक कविता के स्थपति जो हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला के बिल्कुल शुरुआती अध्येताओं में से एक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रीतिकाल रीतिकाल और आधुनिक काल की कविता के अध्यापक प्रोफेसर बच्चन सिंह ने अपनी कॉलोनी का नाम रखा 60 के दशक में निराला निवेश। उसी कॉलोनी में बच्चन सिंह की दीवार से बिल्कुल सटा हुआ मकान प्रकाश कोइराला और बीपी कोइराला साहब का था। उसी में बचपन बीता मनीषा कोइराला का। तो हमारा मन जो है एक बनारसी नौजवान का, वो तो मनीषा कोइराला को बनारस का नागरिक मानता है। और और हमने वो जमाना भी देखा है जब मनीषा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाती थी, तो 200 नौजवान उनको छोड़ने जाते थे विद्यालय। तो एक मैं कुछ छोटा था, कुछ बड़ों का कारनामा था ये। और समाजवाद की प्रयोग भूमि थी, छात्र आंदोलनों की प्रयोग भूमि थी बनारस। तो जो एक आंदोलनकारी अग्रगामिता दिखती है कोइराला में, वो उसका श्रेय न सिर्फ राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव को है, बल्कि बनारस की भूमि को भी है, जो एक समाजवादी ट्रेनिंग है। अशोक जी और आप सब लोग, कनकमणि जी, इस विषय को कैसे सोचते हैं? रुद्राक्ष, हम सब लोग बनारस में जिस रुद्राक्ष का दैनंदिन व्यवहार करते हैं, वो मुझे अभी भी पता लगा है कि वो सब कुछ नेपाल से जाता है, वहां पे हमेशा से चला आता रहा है। ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं, उनको किसी लैब में परखा नहीं जा सकता। डाइसेक्ट कर करके, अलग अलग कर करके, अंग अंग को, उसको मिला के ही उसकी सुगंधि को महसूस किया जा सकता है कि वो क्या चीज है जो इस भूगोल को उस भूगोल से बिल्कुल तदात्म बना देती है। और तदात्म के उन्हीं रेशों की पहचान इस समय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो कौन सी बातें हैं जो हमारे में कॉमन हैं? वो कौन सा वैविध्य है जो एक रूप बन जाता है? मैं नविता जी को, उनके पास बहुत सारी कहानियां हैं, उगते हुए नेपाल की, उगते हुए भारत की, दोनों की दोस्तियों की, दोनों के बीच की खटास की भी। मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात रखें। थैंक यू व्योमेश जी। यस आयोजन कमेटी का सभापति ज्यू, मुख्य अतिथि ज्यू, मञ्चमा आसीन आदरणीय व्यक्तिहरू ज्यू, आमन्त्रित पाहुनाहरूमा न्यानो मायाका साथ स्वागत गर्दछु।
मेरा रिश्ता नेपाल से 2015 में चालू हुआ। हिंदी, इंग्लिश, नेपाली बीच में सब चलेगा। बट कहते हैं कि मैं एक मेरा इस मंच पे आसीन होने से मैं सिर्फ अपनी पहचान ये कह सकती हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, जिसकी पहचान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इकोनॉमिक क्राइम, एंटी करप्शन की है। साहित्य से बहुत दूर-दूर तक का, लिटरेचर का कोई संबंध नहीं है। बट एक आम व्यक्ति की तरह मैंने लगभग 40 देशों में भ्रमण किया। उससे भी ज़्यादा 10 से 15 देशों में तो मैंने बहुत लॉन्ग समय तक काम किया। 2015 में मैं नेपाल आई और नेपाल ने, जिसे कहते हैं, मुझे बदल दिया। और वो बदलाव क्यों आया? और उसमें चाहे धर्म की बात करें, चाहे दर्शन की बात करें, चाहे भाषा की बात करें, सभ्यता की बात करें, संस्कृति, क्योंकि वो जगह मिली हुई थी। क्योंकि मैं जिस जगह से आई हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और लगभग 300 साल पुरानी दिल्ली की ही हूँ, दिल्ली की वासी हूँ। तो एक संस्कृति, सभ्यता समझना, और यहाँ आते ही जैसे कहते हैं ना, एक चक्रा अनलॉक हो गया। और वही मेरे साथ नेपाल में हुआ कि मेरा एक कुछ चक्रा अनलॉक हो गया, जिसलिए मुझे कभी शायद मैं मुझसे बहुत लोग पूछते, शुरू में पूछते भी थे, क्या तुम नेपाली हो? तो आज भी इसका प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं आता कि क्या मैं भारतीय हूँ या मैं नेपाली हूँ। इस बात को मैं और थोड़ा-सा गहराई में 2015-16 के समय में यहाँ रही और काम के साथ-साथ मैंने 10 महाविद्या का भी अध्ययन कर रही हूँ। और करते-करते जब वो त्रिकोणात्मक शक्ति की हम बात करते हैं, तो भारत-नेपाल की बाउंड्री तो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि त्रिकोणात्मक शक्ति तो पूरा भारत क्षेत्र को, जिसको हम कहते हैं, उससे समझी जाती है। तो चाहे वो कामाख्या में होम करे मैंने या दक्षिण काली में, मेरे लिए फ़र्क करना बाउंड्री से मुश्किल है। भाषा की बात करें, मैं जब यहाँ थी 2 वर्ष को काम कर रही थी, तो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखनी ही थी, क्योंकि नेपाली भाषा के बिना मेरा काम पूरा नहीं हो सकता था। तो जब हम भाषा को सीख लेते हैं, तो हम और करीब आ जाते हैं। 15-16 का समय मुश्किल समय भी था यहाँ पर। और तब आती है बात सभ्यता की, कि अगर यहाँ पर मुश्किलें आई, अगर यहाँ पर तेल की कमी हुई, तो उसके समय पर मैं भी यहाँ पर थी और वही 5-5 किलोमीटर चल के जाना काम पर, या उतना ही कम समय में, उस समय में कम खाना, तो मैं उस समय में आपके साथ सहभागी थी और मुझे इतने प्यार से उस समय सबने रखा, तो मुझे फिर भी भेद नहीं समझ आया। तो जब हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बात करते हैं, मैं आज तक नेपाल और भारत में भेद नहीं ढूँढ पाई। तीसरी बात, मेरा काम है, मैं एक डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हूँ और यहाँ के सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जब मैंने बहुत स्टडी करे, तो मुझे एक बात लगी कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे जियो कल्चरली सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं होते? हम सोशल असेसमेंट करते हैं, एनवायरमेंटल असेसमेंट करते हैं, और मेरी इस मंच से दोनों सरकारों को रिक्वेस्ट है कि इस जॉइंट हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, नर्चर करने के लिए, हमें पॉलिसी रूप में इसको बाध्य करना चाहिए कि हमारे सारे प्रोजेक्ट से सोशल इम्पैक्ट में ये ना है कि वहाँ के लोग, अगर उन्हें हमें दूसरी जगह हमें उन्हें एस्टैब्लिश करना है, नहीं, उनकी सभ्यता में भी, उनकी संस्कृति में भी, भाषा में भी, धर्म में भी, दर्शन में भी चेंज नहीं आना चाहिए। सो मैं भारत नेपाल से ये ज़रूर इस मन से अपील करना चाहूँगी। अभी अपनी बातों को विराम देके वापस आती हूँ। थैंक यू। शुक्रिया नविता जी। बनारस में एक मोहल्ला है जिसका नाम है नेपाली खपड़ा। वो नेपाल से जो नागरिकताएं गई हैं, वो उसी मोहल्ले में रहती हैं। वो बिल्कुल मणिकर्णिका घाट के बगल में ललिता घाट पर एक काष्ठ कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ शिव मंदिर है, जो नेपाल के राज परिवार ने कभी किसी जमाने में बनवाया होगा। उसी मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ एक वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम कहिए या विधवाश्रम कहिए, एक ही बात होगी। वहाँ पर ज्यादातर नेपाल और भूटान की महिलाएं अपनी उम्र का चौथापन व्यतीत करने के लिए आती हैं। हो सकता है पहले भी आ जाती रही हों, मैंने उन्हें उनके चौथेपन में देखा है।
उनका जीवन, सुबह गंगा स्नान, उसके बाद नाश्ता, भजन कीर्तन, दोपहर का आराम, शाम को गंगा स्नान, कोई ठगा माया निरोला दिए की बाती बनाती है, कोई महामाया बोराल फूलों की माला बनाती है, तो अपने भरण पोषण और जीवन यापन के लिए भी वो कुछ न कुछ करती रहती हैं। ऐसे नेपाल को हमने बनारस की गलियों में, बनारस के घाटों पर आवारा भटकते हुए महसूस किया है अपनी शेराओं में। बनारस में पशुपतिनाथ के मंदिर में जो लोग उसके विधि विधान से पूजन के लिए नियुक्त हैं, उनका संबंध श्रृंगेरी के मठ से है, और हमारे बीच दक्षिण भारत को, उसकी सांस्कृतिक मनीषा को रिफ्लेक्ट करने वाले आनंद नीलकंठ जी मंच पर हैं। इस विषय को, जो अपने आप में ही बहुत उलझा हुआ है, वो कैसे समझते हैं और उनके पास कहने को क्या है। लग रहा है मेरे पक्ष में कुछ साजिश है कि मैं ही बोलता रहा हूं। Thank you. Is mic working or is my voice loud enough? दोनों बातें हैं। Thank you very much. It's such a beautiful city and a beautiful place. But one of the first things which strike me is the similarity to the place and the culture from where I hail from. I come from the coastal district of Kerala, almost 3,000 kilometers away. The coastal Karnataka and Kerala have a particular temple structure. If any of you have gone there, you will find that there is no difference, not much of difference between the temple architecture there and in Nepal, in Kathmandu. It's all how this similarity came, because you cross 50 kilometers to Tamil Nadu, or you cross 50 or 100 kilometers away from the coastal Karnataka to Mysore, the temple construction changes. It's the Dravida architecture with the Gopuram and other things. In Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, the typical stone granite temples you see. But the pagoda style of architecture in the temples, you find in coastal Karnataka and Kerala, which is very similar. The only difference which I found was there it is everything is built of wood. Here it is with the bricks, and the roof is the same. The roof and the gables and what do you call the all the decorative work, it is the same. I think the relationship came perhaps through the trade which existed from Nepal to China through the Silk Route, and then through the spice route it would have reached the Kerala and the coastal Karnataka structure. I don't know, some art historians will have to tell it. This is my first observation when you come directly. This is my first visit to Nepal. Even though most other parts of India I come, Nepal is a neighboring country, but culturally it is a part of one civilization. Nowhere else in India you find the kind of rituals and the construction, temple construction and architecture, except in Nepal and Kerala. Kerala and coastal Karnataka, like Udupi, from where the Pashupatinath temple priests hail from the Kasaragod district or the Udupi district, the two adjoining districts of Karnataka and Kerala. This is the place from where they hail from. We don't know, at least for last 300, 400 years they are here. But the legend is that Shankaracharya, who hails from Kerala, he had brought them there along with other important temples like Rishikesh and many of these temples, the priests hail from this coastal Kerala or coastal Karnataka part. So same way, I think he had brought them here. At that time, the legend is that the folk legend, I don't know how much historically it is accurate, when during Shankaracharya's time, already in South India, the big dynasties, they had started fighting based on Vaishnavism and Shaivism. So big fights. Perhaps if you have, I don't know whether Ponniyin Selvan, Maniratnam's new film was released here.
If somebody has seen that, you will find that the Cholas were a mighty Shaivite dynasty which spread across up to Southeast Asia, up to Indonesia. They are big temple builders. At that time, there were some priest communities who became Vaishnavites. And there was some sort of fight between them. So Shankaracharya, to unite Hinduism, what he did, he took the priests. This is a folklore. So how much historically accurate, I don't know. He took the priests from these Vaishnavite families and made them the priest of the most important Shiva temple, the Pashupati temple. So it is like Pashupati temple is the Tantric, the Rudra Bhava of Shiva. It's not the Shantava. There he is putting an opposite, perhaps philosophically, an opposite Vaishnavite, those days rival, this thing, Shankaracharya is bringing them and putting them as the priests. Because already the Shaivite kings were telling that we won't consider you as Brahmins because you have gone to Vaishnavism. This era, that era I am telling, not now. So now they are forced, the Shaivite kings are forced to respect these priests because they are the priests of Pashupatinath temple. So this was how culturally they had united. And one more important aspect before I hand over them, before they grab the mic out of me, let me tell. So I think, sir, I think it was only because of the rhythm they made it Kalinga, Kashi, Karnataka. Because once Kerala comes, it's ki. Suddenly. One important thing, Padmanabha temple in Trivandrum will be 3,000 kilometers away. Nothing could be more distant, at least geographically, on the either end of the Hindu civilization from Pashupati and Padmanabha. Papa. Okay, I hope. Pashupati and Vajpeyi in Trivandrum will be 3,000 kilometers away. Padmanabha temple, as of now, is the richest temple or the richest religious institution in the world. Not even Vatican is half as rich as it. Almost, recently they had found almost 3 lakh crore worth of gold. Major part of contribution, at least a significant part of contribution had come from the Nepal dynasty. They kept the records of almost 2,000 years, which all kings have contributed. It was like those days Swiss bank kind of things. And it was kept as a secret. Imagine had the British known, they had taken Kohinoor, they had taken so many things. They didn't know about this wealth which was lying under the Padmanabha temple. And most of the Indian, significant part had come from Nepal. Not only that, the huge, humongous idol of Padmanabha, almost 21 feet long, is made of 12,008 saligrama. These were sent in 17th century all the way from Nepal, from Gandaki river bed, for the construction of the temple. Renovation of the temple is almost 2,000 years old, but the renovation of the temple happened in 17th century during Martandavarma's time. Martandavarma, after defeating the Dutch, had renovated the temple. So he had redone the Padmanabha idol with 12,008 saligrama. The entire thing was taken from Nepal in bullock carts and other things, all the way 3,000 kilometers away. This is a kind of cultural connect we are talking about. It's not just, means if it can connect the most distant part of the country, we can understand how much the civilization is rooted within each other, how the roots are entangled with each other. Thank you. बहुत दिलचस्प। और अभी हमारे बीच दर्शकों में बहुत अनोखे लोग बैठे हुए हैं। अगला सत्र जो है वो भारत के अनन्य अभिनेता कलाकार पीयूष मिश्र के साथ संपादक मित्र सत्यानंद निरुपम की बातचीत है। पीयूष जी यहाँ बैठे हुए हैं, मन ही मन हमें जल्दी से मंच पर हट जाने की कामना के साथ। और हमारे हिंदी के वरिष्ठ कवि अरुण कमल जी, जो अभी बातचीत में बता रहे थे, हमने लक्ष्य किया कि नेपाल कभी पराधीन नहीं रहा है। एक लंबा समय बीता, हमने इस बात की तस्दीक भी की एक विद्वान विशेषज्ञ से। और दक्षिण भारत के साथ भी एक बात है कि वो जो सीधी लड़ाई थी उसमें, और औरंगजेब वाले पीरियड को अगर छोड़ दिया जाए तो मुगलों और अंग्रेजों से वैसे सीधे सीधे आक्रांत नहीं हुआ दक्षिण भारत।
तो ये दो स्वाधीन चेतनाओं का आपसी संवाद भी है, अपनी आपसदारी है। ये विषय, ये पूरा प्रस्तावित किया हुआ जिनका है कनक मणि दीक्षित जी, जो इस के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, लगातार इस विषय, इसकी चेतना के आसपास काम कर रहे हैं। मैं बगैर किसी भूमिका के उन्हें आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू व्योमेश जी। आप बनारस से हैं और मेरे पर्सनल बनारस से रिश्ता, वहाँ का जो मोहल्ला है, आपने कुछ मोहल्ला का नाम भी किया, राम कटोरा। राम कटोरा से मेरा पर्सनल फैमिली का लिंक घनिष्ठ है, और उसके साथ ही लोहरावीर। और आप, you will also find that many Nepali families have such intertwined links with other parts of South Asia, in particular other parts of present day India. Firstly, let me only speak about Banaras, Kashi. Sadly, at this point, the contemporary linkages between Kashi and Kathmandu, Kantipur, have been drastically weakened. But since historical times, when Nepal's place of refuge, when यहाँ का राजा रजौटा had to run away from political intrigue, when people had to escape, not just to go to Kashibas, but to find some kind of security, they would go to Kashi. Uske baad, during the Rana era, Rana era was a time when politically Nepal was closed off. But the city, the region which kept Nepali-pan alive was Kashi. In particular, the growth of, since the world of Gutenberg press and printing arrived, the spread of the Nepali Bhasha happened first out of Kashi, when publishing houses grew up in Kashi. And these were publishing houses that published for the masses, not for the intellectual classes. And one of the first things that they did was publish the Nepali version of Ramayana. And what happened was, when Nepali Gurkha soldiers, look at the interesting way in which Nepali Bhasha spread through Nepal, because Nepal is a country where what is known as the Khas Bhasha is a late entrance. Kathmandu Valley is the place of the Newar. The language extent here is Nepal Bhasha or Newari. Other parts of the country have other languages, but the link languages that developed was Nepali. What is the role of Banaras in this? The role is, when the publishing began in Banaras, because there was intellectual freedom there, you could publish, which you could not publish out of Nepal. Then the Gorkha soldiers who fought for the British, later after 47, of course, for India as well, but the British Gorkhas, they came from all over Nepal. They did not have their own liturgy or their own even scripts. So they began to pick up Nepali as a link language among themselves in the British Gorkhas. So when they had to go back to the villages, what did they pick up with them? They picked up Bhanubhakta Ramayana, published in Banaras. And that is an unrecorded history of the spread of Nepali language, that these non-Nepali speakers, in order to carry erudition back home once after they had fought in the wars, they picked up copies of Bhanubhakta Ramayana in Nepali from Kashi and took it to the, not even coming to Nepal Mandal, Kathmandu. They went into the capillaries of the country. These are the kind of linkages that I believe this session and this festival is helping us to delve into. For example, now I will go back quickly to the other names in the title. Nepal itself, Nepalis also prided themselves in saying, we were never colonized. Nepal was never formally colonized, and that is unique in South Asia. But
it is something deeper than that. Nepalis love to say that we were a closed kingdom. Up to a point, the closed kingdom is true. Politically, it was closed off, especially after the Rana regime began and ended after a century in 1950. So the world loved to say Nepal is a culturally closed kingdom, but sorry, politically closed kingdom. But Nepal was constantly connected to the rest of South Asia. This, there was, till today, Nepal has an evolved frontier with India. Unlike every other frontier of South Asia, the only historically evolved frontier is Nepal, India. And which is why it remains not porous, but it remains open. But beyond the border, that openness is here till today, yes. But we are also being constricted by the feeling of nation state, yes. But the aspect of Nepal that Nepalis themselves, in priding themselves in their nationalistic identity, tend to forget is that the cultural links of Kathmandu was udar. It was open, it was inclusive. So I will only give some examples. Niralaji already spoke about links to northern Kerala, the Nambudiri Brahmins, and Karnataka, you said, yes, who have links with the Pashupatinath Mandir. So in that sense, we have one ka taken care of. The other ka we already talked about a bit, Kashi. The other ka, which doesn't fit into the program title as such, is Kamrup. So you have our most important tantric deity of this valley, who is also a Buddhistic deity. He's also a pre-Buddhistic deity, Bungdeo, also known as Machindranath, the guru of Gorakhnath, also known as Lokeshwar, Padmapani Lokeshwar, which is the Buddha Bodhisattva of compassion. This is Lord Pashupati Machindranath, whose thalo, whose place of origin, today there is a great Mahotsav happening in the village of Bungamati, just south of Lalitpur today. So Bungamati has this incredible chariot. आप लोग जगन्नाथ पुरी के रथ यात्रा के बात करते हैं ना, मेरे ख्याल में the festival in the raw is the Rath Yatra of Machindranath, which happens before pre-monsoon every year here. So Machindranath in the myth comes from Kamrup. Likewise, there are linkages. Why only go back to medieval India? Go back to Mughal times, pre-Mughal times. The linkages are all over. This morning, many references to Upanishads and the Rig Vedas and other linkages which tie Nepal with the rest of South Asia. But if you come back to more recent times, I will give two examples and I'll end at that point because there's too much to say otherwise. Begum Hazrat Mahal, when she rose against the princess of Awadh, when she rose up against the British Empire as it was spreading across the plains, she fled to Nepal. So on the one hand, Jang Bahadur was giving support to suppress the Sepoy mutiny in India. At the same time, he had enough sense of sovereign self to give refuge to Begum Hazrat Mahal, whose mazhar is right here next to the आप लोग किसी को समय है तो to pay respects right next to Ghantaghar in Kathmandu. The mazhar is there as yet. That is Begum Hazrat Mahal. That is also a linkages. Because the linkages that we tend to talk about right now in Nepal is, ek to kehte hai roti beti ka sambandh. That essentially means the same demography across the open border, having linkages, and that is to be respected. That is very important. The other linkage we will talk about is the Raja Rajauta ke beet rishte. For example, we're talking of Kalinga. The Raja of Mayurbhanj was married to the daughter of King Tribhuvan. The linkages between Mayurbhanj of what you would call northern Utkal or northern Kalinga with Nepal also goes deep. Today, there are hundreds of students of Nepal studying in Bhubaneswar. That links continue till to this day. But the link between the kings and kingships,
ग्वालियर से संबंध रिश्ते है, जैसलमेर से होगा, इधर से होगा, ये भी है. लेकिन at the much deeper level of enmeshed cultures, Nepal was fully part of South Asia. Not only that, Nepal was a leading light of the culture of South Asia. And when I say Nepal, I mean Nepal Mandal. This is this incredible valley in the 2,500 mile of the Himalayan region. There is only one valley like this. Kashmir Valley is a river valley. Kathmandu Valley is an aberration. It is a bowl in the middle of the mountains. Average elevation is 3,800 feet, and it is completely unique. It was a former lake bed, hence it was rich in loess. Hence, when the lake got drained, it became rich in agriculture, and hence this cultural profusion that Niralaji spoke about. Our art and architecture and archaeology, everything made Nepal rich in itself, but connected to the rest of South Asia. I'll end with one last connection, and I could go on, so I'll stop there. This town that we are in Patan, it has all the temples that we talked about earlier, the temple struts, the tile. Most of the architecture here is mud and wood based. So mud means mud mortar, bricks and tile, and wood. And some stonework also. But the Lalitpur, that is, each town of Kathmandu has three different names. One original primeval indigenous name, one what you would call the Khas or the modern Nepali name, and one the Sanskrit name. So my town, this is Patan. The Nepali name is Patan. The indigenous ancient name is Yala. And the Sanskrit name is Lalitpur. So this is the town of the arts. So in the middle of the Darbar Square, and our visitors will have to visit Darbar Square. It is the best preserved Darbar Square of the three main kingdoms of Kathmandu Valley. Within there is one temple called Bhaidega. I'll tell you only a little bit about Bhaidega. So during the time of Aurangzeb, Kashi Vishwanath was destroyed, and the Gyan Bapi Mosque was also built at that time. And for me, by the way, that is history. That should not inform our present, which is the present attempt, even in India, to have 400-year-old history to try and influence our present day culture. But I'm talking history. So when Kashi Vishwanath was destroyed, this is 1669 or thereabouts. The people of Hamare Patan ke log bihwal ho gaye. What do we do now? Where do we go to pay our obeisance to Vishwanath? So at that time, it was the time of Yog Narendra Malla, the king of Patan. His prime minister was from a town of Pharbing, just south of Kathmandu, of the valley. He was the prime minister and a person well known and had both Yuddha Kaushal bhi the uske. He said, I shall build you a temple. So he built a temple to Kashi Vishwanath right there in Patan Darbar Square, the only temple built by a commoner, linking the valley, this Nepal Mandal, to Kashi. The only tragedy was that it stood for 300 years in what you know as the Great Bihar earthquake, 1939. This temple fell. And right now, we are in the process of rebuilding a temple originally built in 1679. It fell in 1939, and it is being rebuilt, not just because the people of Patan need their Vishwanath, but this Vishwanath links Nepal Mandal to Kashi. मन में एक इतने सार गर्भित वक्तव्य के बाद भी एक जिज्ञासा है सर, वो रामकटोरा और लहुरा बीर से आपका क्या संबंध है? ये बनारस के दो मोहल्लों के नाम हैं, क्योंकि वही मेरा घर है सर. Well, I have to apologize to the audience to talk very personally. आज सुबह मैंने वाजपेयी जी को भी थोड़ा सा कहा था, and already I was feeling embarrassed to talk about me and my clan and my family and my ancestors. But ऐसा हुआ कि हमारा ancestors ये पूर्वी पश्चिम पहाड़ के गरीब ब्राह्मण थे.
ऐसे चलते चलते काठमांडू उपत्यका आ गए और नेपाली में जी भने दरबार पस्यो, got involved in the palace, came into some power and some wealth, and आपको जब पैसा होता है क्या करेंगे, आप यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ करके आप ऊंचाई का सोच रखते हैं ना, एक यज्ञ करके आप दीक्षित बन जाते हैं, दीक्षा पाते हैं। और मेरा पूर्वज के मित्रों ने भी कहते थे कि ये दीक्षित तो आपका ही है, आपका पूरा क्लैन का नाम कैसे दीक्षित हो गए। अब मैं भी उससे समर्थन कहता हूं कि मैं तो होना चाहिए कनकमणि आचार्य, पहाड़े बाउन, लेकिन आई एम कनकमणि आचार्य दीक्षित बिकॉज इट वाज गिवन लाइक ए लिनियज। सो पहला यज्ञ जो हुआ उसके लिए स्पेशल वो चाहिए था, ब्रिक्स भी स्पेशल मंडप, और उस वक्त बनारस में भी वैसे यज्ञ करने के रीति रिवाज खत्म हो चुका था, और बहुत रिसर्च करके मेरा पूर्वज, सातों पूर्वज, सेवेंथ एंसेस्टर ने वो किया, और उसके वजह से राम कटोरा में जो पूजा पाठ और होम हुआ, उसके बाद हम दीक्षित बन गए। और इरादा था मेरा सेवेंथ एंसेस्टर को कि वाजपेयी यज्ञ करके वाजपेयी बनने का, वो पूरा नहीं हो पाए। वाजपेयी यज्ञ का किस्सा आपको पता ही होगा। वाजपेयी वो ब्राह्मण थे, अब पता नहीं हिंदी में इसका क्या मतलब निकाला जाएगा, जिनके मंत्रोच्चार से यज्ञ में अग्नि संभव की जाती थी। अब अशोक जी को तो नास्तिकता उपहार में मिली है अपनी बौद्धिकता से। वो खुद ही कहते हैं कि आस्था का वरदान नहीं मिला, लेकिन बहुत कुछ है इस विषय पर ऐसा जिस पर अशोक जी को सुनने की जिज्ञासा हो रही है। अशोक वाजपेयी। मित्रों, इस पैनल में मैं सबसे अनुपयुक्त व्यक्ति हूं, इसलिए कि मेरे पास नेपाल और भारत की निरंतरता या उनके संबंध या उनके सद्भाव इत्यादि इत्यादि के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी छवि बन जाती है कि उनको हर चीज का पता होगा, तो संभवतः आयोजकों ने मुझे इस पैनल में इसलिए रखा है कि कुछ ना कुछ गप तो मैं लगा ही दूंगा। तो मैं अब जो गप लगाने जा रहा हूं उसका इस विषय से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो मैं जो गप लगाने जा रहा हूं वो ये है कि इस पर हम कई बार गौर नहीं करते हैं, और खासकर भारत में नहीं करते हैं, कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है उसमें भारत के बारे में नेपाल तो बहुत जानता है, लेकिन भारत नेपाल के बारे में उतना नहीं जानता है। न केवल नहीं जानता है, जानने की कोई इच्छा भी बलवती होती नजर नहीं आती। हम अपनी विशालता से ही इतने आक्रांत हैं कि हमको ये एक तो ये बात ध्यान में रखने की, दूसरी बात ये भी ध्यान में रखने की है कि हमारी समानताएं जो हैं सो तो हैं, लेकिन हमारी विषमताएं भी हैं, और ये विषमताएं भी उस संबंध का हिस्सा हैं जो समानताओं पर आधारित माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में तो नेपाल की दिलचस्पी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रही है, लेकिन भारत में नेपाल में दिलचस्पी क्यों घटती गई है या कम होती गई? जब हम सद्भाव की बात करते हैं और समानता के जो भी प्रसंग उठाते हैं वो अतीत के हैं, वो इतिहास के हैं, परंपरा के हैं, संस्कृति के हैं। वर्तमान संदर्भ में हमको ऐसे प्रसंग कम याद आएंगे, कम से कम अभी तक नहीं आए। हाँ, हो सकता है कि ये
जो जानकार लोग हैं इनके पास वैसे प्रसंग भी हों। आपने थोड़ा बहुत कोयराला परिवार और राम मनोहर लोहिया और वो समाजवादी उसका कुछ जिक्र किया है, पर वही एकमात्र आधुनिक प्रसंग है। तीसरी बात यह है कि कभी हमने ये भी नहीं सोचा है भारत में कि हम विश्व की कल्पना में कहां कहां दाखिल हुए हैं। मैं इसी के आपको दो चार किस्से सुनाना चाहता हूं। पहला किस्सा है बीथोवन का। बीथोवन पश्चिम का बड़ा भारी शास्त्रीय संगीतकार है, और कम से कम मैं शास्त्रीय संगीत का, भारतीय शास्त्रीय संगीत तो थोड़ा बहुत मुझे आता है, लेकिन मैं पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। पर बहरहाल मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बीथोवन और भारत का कोई संबंध हो सकता। तो एक इतालवी विद्वान आए हमारे कुख्यात इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। वहां उन्होंने एक पर्चा पढ़ा, बीथोवन एंड इंडिया। तो वो सुनने में गया तो मैं बड़ा चकित हुआ। अब कहानी जो है वो ये है कि बीथोवन has passed through a great period of creativity and was undergoing some kind of a depression when he happened to encounter the translations of the Vedic corpus into German by Max Muller. He also came across the great poem that Goethe wrote about Shakuntala. So he kept a diary, which is called Tagebuch, a daily diary in German, in which he noted, at one point he noted, I want to create an ensemble of religious voices from India. At second point he wrote, I think I'm not losing my heart anymore, etc. अब ये जो इतालवी सज्जन थे, he quoted the whole German translation of Nasadiya Sukt. Now one should talk about Nasadiya Sukt for the simple reason that we seem to believe that the Vedic corpus is very, very strongly integrated corpus. It is not. Professor Dayakrishna had reassembled the Rigved. And in this reassemble, क्योंकि ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, ये सूक्त हैं, वो अलग अलग बिखरे हुए हैं। एक ही ऋषि ने हो सकता है 5 सूक्त गढ़े हों, तो वो 5 अलग अलग जगहों पर हैं। तो उन्होंने उस कप को एक साथ कर दिया। तो उसमें उन्होंने 2 बातें खोजी। एक तो कि उसमें ऋषियों के अलावा ऋषिकाएं भी हैं, यानी स्त्री संत या जो भी कहें आप उनको, जो वैदिक ऋषि हैं वो भी हैं, और कुछ ऋषि आदिवासी। ये तो एक हुई बात। लेकिन उस नासदी सूक्त में आप सब जानते होंगे, बहुत सारे लोग, भारत में बहुत लोग नहीं जानते हैं, हो सकता है काठमांडू में ज्यादा जानते हो। नासदी सूक्त में ये कहा गया है कि जब ये पहले तो वर्णन है कि क्या ब्रह्मांड है, ये है, वो फला है, और फिर ये कहता है ऋषि कि ना जब ना अंधेरा था ना उजाला था, ना उपस्थिति थी ना अनुपस्थिति थी, न था न था, तब क्या था? तो पहले तो जैसा प्रत्याशित है वो कहता है कि हो सकता है उसको पता हो जिसने ये सृष्टि, उस विधाता को पता हो जिसने ये सृष्टि रची है। फिर रुकता है और फिर कहता है हो सकता है उसको भी पता ना हो। अब नासदी सूक्त ये कह रहा है कि ये सृष्टि जो है
उसको रचने वाले को भी पता नहीं होगा। तो अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में इस सूक्त का उदाहरण देते हुए ये तर्क दिया है कि भारतीय संशयवाद की शुरुआत ऋग्वेद से होती है। तो हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी परंपरा सिर्फ सहमतियों और आश्वस्तियों और निश्चयात्मकता की परंपरा नहीं है, वो संदेह की, असहमति की, विवाद की और संवाद की परंपरा। एक बात, बीथोवन पे लौटते हैं। एक गप्पी आदमी हूं तो इसलिए कुछ भी कहां चला जाऊं भरोसा नहीं है। तो अब बीथोवन के इस विशेषज्ञ ने ये लिखा है कि जब पहला पीरियड उनका समाप्त हुआ और फिर भारत के आध्यात्मिक संपदा से उनका साक्षात्कार हुआ, तो जो उनका अंतिम चरण है उनकी सृजनात्मकता का, उसमें वो अधिक मानवीय, अधिक खुले और कम ईसाई हो गए। यानी there was a difference made by the encounter with India, that he became less severe a Christian as he was in his earlier phase. In this phase, it became more human, more open, and more inclusive in a sense. So this is one. Joseph Brodsky, there must be many people who would know that he was a great Russian poet. Joseph Brodsky, before he died, in fact, 10 days before he died, he gave a long interview. That's his last interview, in which he says that during his boyhood and when he was a student in the university in Moscow, Bible was banned in Soviet Union. So there was no access to the Bible. But translations of Indian Upanishads and Gita, etc., in Russian were freely available. So Brodsky says that he got introduced to spirituality through the Russian translations of Indian metaphysics. And then he describes that Indian metaphysics is like you are approaching a range of mountains. And as you come nearer the range, you realize there is another range of mountains behind. So this is Brodsky. The third is Roman Jakobson, who was a great linguist, who studied in Frankfurt School, famous Frankfurt School, etc. Was a great friend of Mayakovsky. One of the most outstanding essays on Mayakovsky was written by Roman Jakobson. Roman Jakobson became a professor of linguistics in Harvard University. And he also became the chairman of the Association of American Languages or something. So in his presidential address, he said, if somebody today lays a claim that he or she has discovered a new theory or a new insight into the functioning of language, before making that claim, he had better check up. Some goddamn Indian centuries ago have not already articulated it. Wow. One of the great disinheritance in India today is this deep thinking about language in our tradition. We were almost the first civilization, although we need not be the first, but we were almost the first civilization which kept on thinking about function of language through millennia. And today, what is happening in India to language, to languages, show how far away and how ignorant we have become
about language. And this thinking about language was not merely confined, it was reality, language and memory, all these issues which you think are very postmodern or whatever, had already been thought of. Now, what I'm trying to say is this. All this is part of a fading memory. Today, we are perhaps in India in the worst period of amnesia. We do not remember. We do not recall. What we are made to recall is something which may not have happened at all. What we are made to recall is something which has never transpired. But what we are not able to recall is what happened in our thought, in our philosophies. And mind you, there is no single philosophy. There's no single vision. There's no single anything which can be identified as Indic. It is a multiplicity of various kinds. And yet, there was a dialogue. In India today, dialogue is not possible. In India today, dissent is not possible. It is possible only in closed door. It is not possible openly in public spaces because dissent has been criminalized. So the notion of India, Indic vision of mankind, Indic vision of the world, Indic vision of reality, Indic vision of language, etc., is under severe assault. We are not suffering from a simple political economic crisis. We are suffering from a civilizational crisis. And perhaps we can learn in this. We want to. We don't want to learn, in fact, anymore. We want to imitators. We are the great imitators. India today is a big imitating country. We imitate the worst in the world. Anyway, if we want to get out of this, perhaps there are lessons in Nepal to be learned from, to know how we can, without losing memory, without losing our recall of history, live in the present with some dignity, with some sense of satisfaction, and with some sense of dialogue and dissent. Thank you. Must appreciate how cleverly I got onto the subject, and led you away. अब आप समझ लीजिए कि गप क्या चीज है। जो गल्प का अपभ्रंश है, गप सुनते हुए लगातार गल्प की याद आती रही। अशोक जी का ही एक लेख है जो हिंदी के एक और गप्पी महान उपन्यासकार, आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर एकाग्र है। उसका शीर्षक है प्राचीनों से गप लड़ाता एक आधुनिक। तो दो देशों की पारस्परिकता के बहाने हमारे मन में, एक नागरिक के मन में किसी देश की कैसी छवि निर्मित हुई है शताब्दियों में, उसे अपनी गप से, जो कि यथार्थ के सबसे तीखे और सबसे समसामयिक बोध से पैदा हुई है, उन्होंने हमारे सामने रखा। कनकमणि दीक्षित जी के मन में कुछ बातें हैं जिन्हें वो बिल्कुल अंतिम वक्तव्य की तरह शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद ये सत्र पूरा हुआ माना जाए। Thank you very much. What Ashok just said at the end, I felt I would be able to complement and add to this point about the power of dissent and the power of the use of the power of language for the sake of stability, and the words he used, dignity, maryada, and in openness. For that, he also made a point. Is there something that Nepal could teach the rest of South Asia or India? I would not
be उतना दृष्टता तो मेरा नहीं है to कहना कि नेपाल से सीख लो. लेकिन I thought I might just add to the point, and Navita ji is also wanting to say. I will just make this point. पहले तो Nepal is no God's gift to mankind. We have all the weaknesses that other countries have. We also have the same sense of certitude that many countries have, a sense of exclusivism. So all that weaknesses Nepal has. And Nepal is also carried away by this wave of nation statism, which takes us further away from our civilizational route, because we are all supposed now to become Indian and Pakistani and Bangladeshi and Sri Lankan, forgetting that there is a different layer of identity that a person of South Asia needs. A nation state identity itself is not enough for us to feel complete. That we must either, in one direction, go back towards the mohalla, to one's primal clan identity, which is also not a bad thing. But as one goes up to the nation state and beyond, you must have something that links us to our civilizational history, the Indic history, which would link us to Tibet, which would link us to, as I said, Arakan, the Northeast India, to Sindh and Balochistan and Sri Lanka. So I feel in Nepal also we are losing some of that because we are being flooded by the tsunami of nation statism. Lekin, this is where I now go to the point made by Vajpeyi ji, that in India, as it stands today, the nation state, the space for dissent is evaporating. The place to talk and to challenge with dignity, that is disappearing. And here in Nepal and the surrounding states of South Asia have always looked to India as the exemplar, especially with independence, with Nehruvian, Gandhian thought. These are the ideals of Fabian socialism and representative government and then local government. All the examples that we were looking at in India are today being eroded in India. So iske baat hai do baat. Ek to we must each protect our societies. We should not try to reflect ourselves and try to be like somebody else. Like Nepal should not try to be like India, but it should excel in itself. Now, where is it then that Nepal can do something differently? Abhi aapko itna hi main keh दूं, and this is, I used the word drishtata earlier. Forgive me for my drishtata. I think for today, as we go to press at this instant, Nepal is the most open society of South Asia. It is more open than what tragically we see India to be evolving. It is more open than Bangladesh under Sheikh Hasina. Even though the world is being told Sheikh Hasina is running a successful country, that's mainly because the New Delhi media is telling us that. The dangers within Bangladesh, only Bangladeshis know. Sri Lanka, we know the problems that are happening there. Pakistan always is been propped up as the basket case, the worst of all, forgetting that the people of Pakistan are the most suffering of all of South Asia, even if you talk about terrorism. So in that mahol, in that context, for now, and I do not even take credit for Nepal for being the most open society. It is our historical evolution that has given us an open border. And also for now, we are the most open society of South Asia. Up, mera ye कहना है in this conclave, in this gathering, people in Nepal should value the openness that they have. Tragically, we take it as a given that it is ours, and we are not given to protecting it. So even in Nepal, the index of openness is sliding downward. Yet, in relative terms, in South Asia, it is the most open. So, itna last mein main keh दूं, Nepal needs to remain an open society, pehle baat to for its own sake. Nepal's economic, social, cultural preservation and advancement is not possible, unlike some small principality, without this open society. But दूसरी बात है कि जैसे we have got together here with such ease, this is a India Nepal conclave. But even if we did a South Asian conclave, Nepal has the most open visa regime in South Asia. You could meet a Pakistani, you could meet a Bangladeshi, a Burmese,
a Sri Lankan right here in this conclave. We need to keep Nepal open for that reason. And the reason for now Nepal remains thoda sa open is the power of the vernacular. आप हिंदी के हिमायती हैं, आप मैं ये कह दूं कि in India, in Nepal, because of our particular historical evolution, a Bauddhic charcha will go out in the Nepali language, and it can be read from the village chai pasal to the editor in his editorial cubicle. The Supreme Court of Nepal's decisions are written not in English, like in Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka. They are written in Nepali. So an average petitioner can actually read the Supreme Court decision. To me, somewhere, and I will not go deeper into this, somewhere there is the power of the vernacular that keeps Nepal stable. And I would suggest for the rest of South Asia also, we must go with the same level of openness and udarta and dignity in Hindi and in other languages to make South Asia as a whole, keep it open. Thank you. नविता जी भी थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हैं। पीयूष सर नीचे बैठे हुए हैं, इस बात का ख्याल करके। जी। Just wanted to add to the open border point and where I was intersecting with development work. Recently, there was a report on sex trafficking along the borders. And one of the multinational partner commented on the open border. And this is where I keep saying that we can talk about civilizational heritage, preservation, and how to nurture it, but we have to be also equally vigilant that these development studies are not addressing the issue of trafficking as a concern they see it with the open borders. Rather, it has to be addressed more the challenge of poverty, which needs to be addressed. It's the issue of education. So it is an onus on all of us to preserve the open borders for the sake of shared heritage. Second point, what was touched upon by Kanakji, about the liberalness in the society, which is something I very closely felt. And I give two examples. When I was there again those 2 years, I used to travel a lot to the temples. And something which struck out is the Kamaladi Ganesh and the Kalika Sthan. Now you ask, what is so unique? You can actually, you don't have to stop. You can actually go around the temple in your vehicle, and you could, as a youth, or all of us, even me, I don't even have to take out my shoes or chappal. I could just go and bow, pay my obeisance, and come out. And now that stood out to me because nowhere in India I can enter a temple without not taking out the shoes. What touched me that just because there is this ease of going around, I actually have written many times that I see most youth connected in Nepal to the religion, not as religion, but as way of life. So what we need to move, and this is something I really celebrate and I love about the youth here, that they are not living it as faith, but actually as way of life, and something which I would imagine that we in India also start embracing and become more liberal. Another example which stood out, it's nearly my father traveled to Hong Kong back in 60s. I've only seen it pictures, my father wearing a big tika and full of so many garlands. After that, all these years, I've never seen that in India, but I love the sight at the Kathmandu airport, Tribhuvan airport. So many youth, these are youngsters who are tech smart. Uh, really, these are innovative, tech savvy youth, but they are fully, they wear it as way of life. They're wearing so many garlands and big tika. And this is where I feel that if you're a liberal society, don't make it as a compulsion, as a faith, but more as a way of life. The youth are going to carry forward the civilization, and that's my message.
बहुत से दृष्टांतों से वही साबित हुआ है जो बिल्कुल इस प्रसंग की शुरुआत में हमारे मन में था। अंत में आके आदरणीय कनक मणि दीक्षित जी ने बहुत जैसे उस पूरी बातचीत का सार हमें दे दिया है कि जो चीज हमारे लिए सीखने की है वो है भाषा की शक्ति पर भरोसा करना, और जो महत्व भाषा को इस सभ्यता ने दिया है उसको अपने अपने आचरण में लागू करने की कोशिश। मैं बहुत मगन हूँ कि नेपाली भाषा के प्रसार में, उसके अभ्युत्थान में बनारस का एक रोल है। हम लोग तो अपने बचपन में सर कामायनी के नेपाली संस्करण, चित्रित संस्करण जो है वो नागरिक चाणी सभा ने प्रकाशित किया था पहले, और बाद में उसका पुनर्प्रकाशन हुआ था। वही देख देख के मगन रहे। हम लोगों की कविता जो बिल्कुल हिंदी की युवतम कविता है, उसका जितनी जल्दी बगैर किसी प्रयास के, जितने सहज नैसर्गिक तरीके से नेपाली में अनुवाद हुआ, अशोक जी का कहना बिल्कुल सही है। हमें नेपाल की समसामयिक कविता के बारे में नहीं पता है, लेकिन नेपाल हमारी कविता को जानता है। केएलएफ बहुत शानदार काम कर रहा है। ये सत्र जितना दूर की कौड़ी लाने वाला था उतना ही बढ़िया लग रहा है, कम से कम मुझे। उम्मीद है आप भी इसे ऐसा ही पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। Thank you so अगले much. सत्र के लिए सब लोग यहीं बने रहेंगे। Wonderful to hear all of you, distinguished speaker. We got lot of information about beautiful tie and inevitable bonding and similarities between India and Nepal by culture, religion, literature, and emotion. And now I would like to call upon the stage a renowned dramatist, Assis Malla, to honor the letter of appreciation to distinguished participants of this session. And the volunteers, please. Today's session of our speakers are renowned and senior poet Ashok Vajpeyi, distinguished literary figure Kanak Dixit, Navita Srikant, and renowned novelist Anand Neelakantan, and the moderator is Vyomesh Shukla. Okay, let's give him them big hands.